Government of India, the captains and leaders of the industry across sectors, and then our very friendly and supportive friends from the media and all the other very distinguished special invitees, eminent guests, ladies and gentlemen. It's a pleasure and honor to be greeting and welcoming all of you in this very exclusive occasion, the curtain raiser event of the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023, which is scheduled to be held from the 10th to the 12th of February 2023. And today's event, ladies and gentlemen, is a window to the progressive world of the state of Uttar Pradesh, which, as we have seen under the leadership of Honorable Chief Minister, has undergone a huge transformation since the time he has taken over. And now the state government, the state of UP, under the leadership of Honorable Chief Minister, now aims to be the fastest growing economy of the country, become a $1 trillion economy, and be a leading contributor to the India growth story, to the $5 trillion economy of the country which is aimed at, and be thus New India's growth engine. Towards that, the government of UP proposes to attract investment intents of 10 lakh crore rupees during the Investors Summit, and towards it, the government is taking various transformative steps. So in this program, we are going to be introducing to you the various conducive and enabling policies being introduced by the government of UP, the very facilitating and friendly business ecosystem which is being extended by the government. And this is going to be helping you take more informed decisions regarding your investments in the state, and also towards considering Uttar Pradesh as one of the most profitable, preferred investment destination, both by the national as well as the international investors. So with this intent and commitment, ladies and gentlemen, as we open the doors for all of you to be partners in success towards the growth of Uttar Pradesh, आइए इस कार्यक्रम का हम विधिवत उद्घाटन करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अपने अटूट विश्वास के साथ ज्ञान और ज्योति के प्रतीक दीप को प्रज्वलित कर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह अपने करकमलों द्वारा इस दीप को, इस ज्योति को प्रज्वलित कर कर्टन रेजर इवेंट यूपी GIS 2023 का शुभारंभ करें, श्री गणेश करें। और मंचासीन सभी से भी निवेदन है तो सभी की शुभकामनाओं के साथ और सभी के लिए शुभकामनाओं के साथ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ दी डायनामिक श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी को, हमारे माननीय मुख्य सचिव। उनसे निवेदन है उनके अग्रणी विचारों के लिए और उनके स्वागत संबोधन के लिए। Our Reverend Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Finance Minister, Honorable Ministry of Industries, other Honorable Ministers on the dais, distinguished guests, Honorable Ambassadors and the High Commissioners of different countries, and the other dignitaries from the different embassies and High Commissions in India. Respected Secretaries and Additional Secretaries to Government of India, Chairman and Managing Directors of different central public sector undertakings, members from the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's my privilege
to welcome you all here for this grand event, the curtain raiser ceremony for the Global Investors Summit of Uttar Pradesh, which has been scheduled to be organized in Lucknow between 10th to 12th of February 2023. Honorable Chief Minister has targeted that we bring investment to the tune of 10 lakhs crore rupees, which is $125 billion during this event, 3 days event in Lucknow. And this is part of his vision for the $1 trillion economy of Uttar Pradesh. The state is ripe with huge opportunities. It is shaping in the line of the Honorable Prime Minister's vision of New India. The Amrit Kal, the journey towards the country being developed as a developed country. When we have the 100th anniversary of the Indian independence in 15th August 2047, the country is developed. And for that, UP is taking a leap forward under the leadership of our Honorable Chief Minister. Everything which is needed for investments of all kinds has been made possible in the last 5 years. In fact, I would like to inform you that in the last 5 years, total investment to the tune of nearly $45 billion, that is more than 3.5 lakhs crores, have come to Uttar Pradesh. A lot of industries are already come to the manufacturing, or they are in the process of getting that done very soon. And this has given us a confidence. The kind of law and order which is needed, in fact, our Honorable Chief Minister is revered across the globe for his clear vision to make sure that everybody gets an opportunity under the peace and lawful situation, where they are able to do their best, whether it is business, industry, academia, or anybody living in the state of Uttar Pradesh. Whether it is infrastructure in terms of expressways, much rapid rail transport, freight corridors, the two major corridors, the western and eastern, they are passing through the major section in the state of Uttar Pradesh. In fact, they are crossing the state of Uttar Pradesh. Waterways, the first waterways, metro system for the cities, the first regional rapid transport system, airports, or anything of the infrastructure you think of, it's all there. It's available for anybody to come and take the best of this to invest in Uttar Pradesh. In terms of utilities, facilities, or the growing cities, the smart cities, our cities are growing fast, and they are creating a conducive environment for anybody to come, settle, and make their business. And this is powering the engine of Indian growth. The Honorable Prime Minister has kept a target of $5 trillion economy, and our Chief Minister has given this call, and something of the kind which has not happened anywhere. For the first time, Deloitte India is helping us. They are helping us in devising the policy, the programs, making systems so that we quadruple the economy. And for this, our teams will be traveling to different destinations across the globe to seek investment, will be led by the Honorable Ministers, Honorable Deputy Chief Ministers, and the Honorable Chief Minister, and also to the different places within the country. I welcome you all here to this state of opportunities, whether it is academia, whether it is any kind of thing which is needed, research and development. In the last 3 months, the state has come up with
25 policies, and they are one of the brightest and the best available in the country, creating a conducive environment for anybody to come, invest, be part of the growth story of Uttar Pradesh, take the state to the height of this $1 trillion economy in the next 5 years. So I welcome you all here who have taken time out of your busy schedule, working in the embassies and the high commissions, in the different ministries and departments of the Government of India, or the important public sector undertakings of the central government, the media who will be covering this and covering this growth over the period of time. You will all listen to our Honorable Chief Minister. He is using the tools of digital, the digital India, the vision of Honorable Prime Minister. It's happening in Uttar Pradesh. And this time and the last time when we were doing it, the investment, we were doing it mostly using the physical system. But this time, the Honorable Chief Minister is going to launch an online system through which every MOU is going to be monitored. It's going to help. We are going to handhold everybody who is coming to Uttar Pradesh as if it's our job. We welcome you as our revered guests. You will have a red carpet treatment in Uttar Pradesh so that we make sure that your growth is part of the state's growth as a part of the India's growth. So a very, very hearty welcome to all of you here in this event, and look forward to listening to our Honorable Chief Minister, his vision for taking Uttar Pradesh to the $1 trillion economy, making it as the engine powering the country's growth towards becoming a developed country. Thank you all. Thank you. Thank you very much, sir, for these insights into the various processes and the thought and the various programs as a run-up to the GIS 2023. And ladies and gentlemen, towards this, the UP government has also partnered with the leading chambers of commerce and industry as industry partners. We have CII and FICCI on board. And as you know, both of them are being led by the leading industrialists of the country. So we also invite their views and perspective. So I would like to first request Shri Sanjeev Puri ji, the Vice President CII, to please address the august gathering. Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Industry Minister Shri Nand Gopal Gupta Nandi ji, Honorable Ministers Shri D.S. Mishra, Chief Secretary, Shri Arvind Kumar, Infrastructure and Industrial Development Commissioner, dignitaries on and off the dais, friends from the diplomatic community, industry and media, ladies and gentlemen. As the industry partner to the Global Investor Summit, it is also my privilege to add my welcome to all of you to this curtain raiser for the Global Investor Summit 2023. It is indeed a privilege for CII to be a partner to the state of Uttar Pradesh for this very important investment summit. And I would like to take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister and the government of Uttar Pradesh for providing an opportunity for CII to be a partner in this very important journey. Uttar Pradesh is already seen as the engine of growth for India. It is the third largest economy. And Honorable Chief Minister, we are all deeply inspired by your passion, your dynamic leadership, your vision, and your boundless energy to usher in a new paradigm of socio-economic development in the state of Uttar Pradesh. Your mantra of inclusive, sustainable, and balanced development, it's truly remarkable, and the impact of that is being seen
across the state. We have seen that your government has taken numerous interventions to set a higher order of competitiveness and growth in the state. Infrastructure is being strengthened. Today the state has a network of expressways. Air connectivity is being strengthened. Industrial corridors are there available for industries to come in. There's a lot of focus on job creation. The law and order situation is balanced and conducive. The state has introduced investor-friendly, progressive policies and a very transparent and proactive governance. All this definitely augur well for the future of the state. If we add to this the natural advantages of Uttar Pradesh, it's a large consuming market with 17% of the population, 56% are in the working age. It is a state which has access to large consumption centers. It is proximal to consumption centers. It is a hub of educational institutes, and some of the finest academic excellence institutes are found in the state. All this, and of course Uttar Pradesh has a very rich agri base. All this make Uttar Pradesh an unmatched investment destination. And with all the proactive steps, the 20 sector-specific investor-friendly policies that have been put in, it comes to us as no surprise that the state of Uttar Pradesh is right on top at number 2 in the ease of doing business and moving very rapidly from number 12 to number 2. And the evidence of this is also there in the way the economy has transformed. From 2016-17 to 2021, the economy has grown from 11 trillion to 19 trillion rupees. And more importantly, and this shows the power of the all-round development, that the per capita income has doubled, unemployment has come down from over 17% to below 3%. All this is a result of all the interventions that have been made, and I'm sure much more will be achieved as the state takes forward its journey to create a $1 trillion economy. The UP Global Investor Summit is a flagship investment summit of the state of Uttar Pradesh. It aligns to the Honorable Prime Minister's vision of creating a 5 trillion economy, and of which the state of Uttar Pradesh has an ambitious target of 1 trillion. It's an excellent platform to experience the strengths of Uttar Pradesh, engage with investors who are already present in UP, engage with policymakers, study the opportunities that have been unlocked through the sectoral specific investor policies, and identify opportunities for investments. So on behalf of CII as the industry partner, I would also like to extend a very warm invitation to all of you, to my colleagues in the industry, and CII will continue to do so as we build up for the Investor Summit, to come and participate and experience the strengths of Uttar Pradesh. Honorable Chief Minister, once again, thank you very much for the opportunity. We look forward to working with your officials to bring the knowledge and expertise of our members to the technical sessions so that the right opportunities and investment can be created during the summit. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our next leading partner, requesting Shri Shubhrakant Panda, the Honorable President-elect of FICCI, for his views. Shri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Ministers and dignitaries on and off the dais, Excellencies, Captains of Industry, ladies and gentlemen. On behalf of FICCI, I'm delighted to be present here today at the curtain raiser for the UP Global Investor Summit, which is scheduled to be held early next year. And it is indeed a privilege to have the presence of the Honorable Chief Minister, given his infinite energy and commitment, which inspires all of us and has truly been transformative for UP in the last several years.
Ladies and gentlemen, as you are aware, UP has made tremendous strides in terms of economic and industrial development, and there are many areas where significant improvement is visible on the ground, and that is what makes the state an attractive destination for investment, which is already beginning to flow in. But of course, there is much more to be done, and I think the Chief Minister's vision and ambition is something that will take the state to great heights. Infrastructure development is an area where UP has clearly made tremendous progress, with a number of expressways, airports, dedicated freight corridors, and other industrial infrastructure. An enabling ecosystem is being created, which in turn will attract large projects by reducing the cost of doing business. Equally, the government of Uttar Pradesh has made concerted efforts to improve the ease of doing business and in general the business-friendly environment in the state. In fact, the state was ranked under the Achievers category based on the implementation of the Business Reform Action Plan of the Government of India, and several sectoral policies, including those in IT and IT-enabled services, film, electronics, dairy farming, defense, aerospace, etc., have, as well as the UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022, provides attractive incentives for investments. And besides that, of course, the law and order situation and generally the focused administration and under the Honorable Chief Minister's direct, I think, supervision is what has been very, very effective in turning around the state's image and making it an attractive destination. So most importantly, I would say that UP is raising the bar in terms of its ambitions, scale, competence, and the can-do spirit under the visionary leadership of the Honorable Chief Minister. FICCI has worked closely with the government of Uttar Pradesh in various initiatives, including the state's participation in the Dubai Expo, the One District, One Product, the groundbreaking ceremony 2, and of course the UP Travel Mart, amongst others. And we were privileged to partner the state government for the UP Investment Summit, which was organized in 2018, and are honored to once again be associated with the UP Global Investor Summit in 2023. As an industry partner, FICCI will leverage its strong connects both nationally and globally, as well as sectoral expertise in organizing various pre-summit roadshows and, of course, the main summit. As the incoming president of FICCI, I am personally committed to support the efforts of Yogi ji and ensure that the government of Uttar Pradesh is able to attract investment to the state. I thank the government of Uttar Pradesh for inviting me to this program and commit full support of FICCI in making the summit a grand success. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है। आप प्रदेश के अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक जल्द से जल्द ले जाना चाहते हैं। इस कार्य में FICCI एक पार्टनर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और आपके सपनों को साकार करने में सहायक होगा। धन्यवाद। Thank you, sir, very much for your thoughts and support and commitment. और अब मैं हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए, and would like to request our dignitaries, in case you wish to use the translation devices, it's there on your tables. आज सर्वप्रथम मैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के इस कर्टेन रेजिंग समारोह में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के वर्तमान और भविष्य को संवारने में सतत समर्पित, उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनाने के लिए संकल्पित, प्रदेश के कर्मठ एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का औद्योगिक विकास विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, एमएसएमई एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, फिक्की के प्रेसिडेंट श्री सुप्रकांत पांडे जी, सीआईआई के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पुरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न देशों के सम्मानित उच्चायुक्त, प्रतिनिधिगण, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्मानित चेयरमैन, डायरेक्टर एवं सम्मानित सदस्यगण, उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियां एवं मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये समारोह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का, नए अध्याय का शंखनाद है। यह अध्याय जो उन्नति और उन्नयन का उद्घोष करेगा, यह अध्याय जो चौमुखी विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, यह अध्याय जो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और चेहरे पर मुस्कान लाने की इबारत लिखेगा। 2017 में जिस दिन इस प्रदेश की बागडोर कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मजबूत हाथों में संभाली है, उस दिन से उत्तर प्रदेश के भाग्य और भविष्य का नया सूर्योदय हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ सुशासन के सूरज की रोशनी प्रदेश के कोने कोने को प्रकाशित कर रही है। उत्तर प्रदेश बदहाली और कुशासन के अंधेरे से बाहर निकलकर विकास की रोशनी में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन की प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा, जन कल्याण को ही अपना एकमात्र मिशन बनाया है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को देश दुनिया में मान सम्मान मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को नए पंख और नई उड़ान मिली है। जहां एक ओर दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और अयोध्या दीपोत्सव का आयोजन गिनीज बुक में दर्ज होकर हमारी संस्कृति का जय घोष कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने की बुनियाद को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश निवेशकों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुकूल एक मॉडल डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। प्रत्येक इन्वेस्टर के हितों का संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि जो एमओयू साइन होते हैं वो केवल कागज तक सीमित न रह करके धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। अभी विगत 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के सबसे बड़े हाइपर स्केल डाटा सेंटर का लोकार्पण हुआ है। ये सरकार और उद्यमियों के बीच समन्वय, सक्रिय साझेदारी, गतिशीलता और प्रभावी कार्यशैली का प्रमाण है। हमारे यहाँ उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल, मानव संसाधन, लैंड बैंक और खपत के लिए 25 करोड़ आबादी वाला उपभोक्ता का बाजार मौजूद है। यही कारण है कि फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहे ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न राज्यों की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का गहन और व्यापक अध्ययन करने के बाद समग्र बिंदुओं को समाहित करते हुए देश की सर्वश्रेष्ठ नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है। डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म आदि 25 सेक्टरों को चिन्हित कर
निवेश प्रोत्साहन हेतु ठोस एवं प्रभावी एवं व्यवहारिक नीतियां बनाई गई है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से हमने इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी इकोसिस्टम बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। एमओयू साइन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेशकों को समुचित सहायता ऑनलाइन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है। हमारी सरकार सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को लगभग 350 से अधिक सेवाएं प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश, उत्तर प्रदेश को देश में दुनिया में एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली है। हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉयज पार्क, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, आईआईटी, जीएनएल एवं फ्लैटेड फैक्ट्री जैसी विकास की परियोजनाओं में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन संभावनाओं को धरातल पर साकार रूप देने में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीआईएस 2023 के लिए नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूके, फ्रांस और मॉरिशस ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहमति व्यक्त की है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बुलेट रफ्तार और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। हमें आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है। अतः एक बार मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, the logo of any organization, country or state is actually its identity. It reflects its intent, its vision and mission. और मेरे ख्याल से आप सभी इस बात से सहमत होंगे और उसको सराहेंगे भी। अब जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अवलोकन करें। So Uttar Pradesh is ready to scale greater heights with the support of all of you. Further, ladies and gentlemen, many of you who have visited Uttar Pradesh will agree that it is a very heady mix of the old and the new, the traditional and the modern, the yesterday and today. और संस्कृति से सरोवर इस राज्य ने बहुत ही खूबसूरती से टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न लिविंग को अपनाया है एक फ्यूचर रेडी स्टेट की दिशा में। So we now bring you and share with you Uttar Pradesh glorious past, its vibrant present and its progressive future, and also the promise of the Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 through a short film. We present you the Curtain Raiser movie. The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023.
The three-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. And ladies and gentlemen, the kind of growth which the government of Uttar Pradesh is aiming at, and towards that, partnering with all of you towards creating a more glorious future for the state of Uttar Pradesh. The government of Uttar Pradesh has been taking various transformative steps and introducing various new policies. To mention to you, the recent developments include notification of around 23 new policies to support and attract new investments into the state. All these have been compiled into a compendium. तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह पॉलिसी कंपेंडियम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसका वह विमोचन करें. So various transformative steps which are being taken towards creating a holistic ecosystem for the industrial development in the state.
waste policies. They have been compiled in this compendium, which is right now being released at the hands of the Honorable Chief Minister. Still down. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. And further, ladies and gentlemen, in order to simplify the process of availing incentives under the various schemes, programs of the government of Uttar Pradesh, a centralized online incentive management system under Nivesh Mitra has been developed for processing, sanctioning and the disbursement of incentives. This is the online incentive management portal. Further, during the UPGIS 2023, a number of MOUs are going to be signed for easing out the process of MOU signing and further to give proper hand-holding support to the investors. An online investor relationship management portal, which is rightly called the Nivesh Sarthi, has been developed by Invest UP. The portal is going to be facilitating the digital signing of MOUs but also enabling the monitoring. माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा अब इन दोनों पोर्टल्स का अवलोकन. New India's growth engine brings you Nivesh Sarthi, online investor relation management portal offering digitally signed MOUs in a ready-to-print format. Dashboard monitored by departments, officers and Honorable CM Office. Facility of uploading and downloading documents. Online incentive management system under Nivesh Mitra, a centralized portal facilitating the online availability of incentives under various sectorial policies of the state. Get the comfort of online application filing, tracking and responding to the department's queries. Get letter of comfort through portal. The portal also makes interdepartmental coordination easy. Online incentive management system, end-to-end digitization of incentives for ease of doing business. देवी सजनों, अब हम हमारे तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच, उनकी मंशा, उनके दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को अनेक ऊंचाइयों पर ले जाने की, उसको जानने के लिए इच्छुक हैं और साथ साथ आप सभी का इसमें क्या सहयोग आप दे सकते हैं. तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ हम सभी के लिए, हम सभी के मार्गदर्शन के लिए. May I request you to please use your translation devices. Thank you. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टेन रेजर सेरेमनी के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव
श्री एसपी गोयल जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री शुभ्रकांत पांडा जी, उपाध्यक्ष CII श्री संजीव पुरी जी, आज के इस कर्टेन लेजन समारोह में उपस्थित एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, औद्योगिक जगत से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी सम्मानित सचिव, PSU से जुड़े हुए सभी CEO, CMDs और मीडिया से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आप सबका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के विजन का कायाकल्प का एक प्रमुख स्तंभ भी उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के मंत्र को उत्तर प्रदेश ने अक्षरशः लागू किया है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास एवं समृद्धि की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश ने सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने अपने करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के आगामी 5 वर्ष के अपने कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस उद्देश्य में हमारी सरकार आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 तक 23 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान किया जा सके। इस 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कॉरपोरेट जगत के शीर्ष कैप्टन्स, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों, एकेडमिया, विचार मंचों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा प्रतिभाग करते हुए व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर सामूहिक रूप से मंथन किया जाएगा। आज इस कर्टेन लेजन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस,
यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 18 देशों और भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड शो का आयोजन भी करने जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध असीम अवसरों का प्रसार करते हुए निवेश को आकर्षित किया जा सके। अन्य देशों के महामहिम राजदूतों एवं उच्चायुक्तों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी उत्तर प्रदेश आएं और हमारे साथ प्रदेश के विकास में भागीदार करते हुए इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने में अपना योगदान दें। हमारे इस प्रयास में बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित इकाइयों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ITS, डेटा सेंटर, ESDM, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, टेक्सटाइल, MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अपने निवेशक सहभागियों के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं अनेक नीतियों का अनावरण करते हुए मुझे आज प्रसन्नता भी हो रही है। इस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य सरकार का ध्येय निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश के निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने एवं राज्य के सर्वसमावेशी विकास हेतु अवसरों का सृजन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की कृपा का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकट स्थित होने और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान भी करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही इज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है। प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट ता हैंड होल्डिंग के लिए हमारी सरकार ने MOU पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली निवेश सारथी विकसित की है। साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ऑनलाइन रूप से समयबद्ध स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है।
इसमें उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक की सुलभता बढ़ेगी। 16,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रदेश में उपलब्ध है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 8.5%, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 57% क्षेत्र भी हमारे राज्य से गुजरता है। दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध है। देश के सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के साथ नाते प्रदेश ने 13 वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेस वेज के साथ स्वयं को एक्सप्रेस वे प्रदेश राज्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 7 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यह एक्सप्रेस वे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास होने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। जेवर में 5,000 हेक्टेयर भूमि में विकसित हो रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वायुमार्ग की घरेलू कनेक्टिविटी के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में 7 एयरपोर्ट्स का संचालन भी किया जा रहा है। 8 नए एयरपोर्ट्स पाइपलाइन में हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू एयर कनेक्टिविटी के लिए 20 से अधिक मार्गों का चिन्हित किया गया है। इस लाभ में वृद्धि के लिए प्रमुख पूर्वी निर्यात केंद्रों जैसे प्रयागराज तथा वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाला देश का प्रथम इनलैंड वाटरवे विकसित किया जा रहा है। इसका वाराणसी से हल्दिया तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग राज्य में पहले से ही संचालित है। समुद्री बंदरगाहों पर निर्यात होने वाले माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ड्राई पोर्ट्स के विकास को भी बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मुरादाबाद रेल से जुड़े संयुक्त घरेलू एक्जिम टर्मिनल, कानपुर में रेलवे से जुड़े निजी फ्रेट टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपो, दादरी टर्मिनल पर इनलैंड कंटेनर डिपो सम्मिलित है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर, राजघाट, रामनगर, वाराणसी एवं प्रयागराज टर्मिनल पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के किनारे विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं। दादरी गौतम बुद्ध नगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित किया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में 100 एकड़ भूमि में भारत का पहला फ्रेट विलेज विकसित हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव इनबाउंड व आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसमें 5 शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है। आगरा में मेट्रो रेल का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों, विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना भी की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी जनपदों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो रही है। उद्यमी अपनी इकाइयां सुगमता पूर्वक लगा सके, इसके लिए प्रदेश में लैंड बैंक के माध्यम से पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश भारत की फूड
बास्केट के रूप में जाना जाता है। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न, दूध तथा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान